Welcome to online sport program of FSEC Photo Rawalpindi. I am Miss Mavish Suhail from Department of Biology. This is biology lesson for grade 10, week 7, lecture number 1. We are discussing about chapter number 12, coordination and control. Today the topic is human ear, in which we will discuss about the structure and function of ear. Objectives. After the completion of this lecture, students will be able to explain about structure of human ear. They will be able to differentiate between external and inner ear. Then function of ear, how sound is produced or process of hearing. They will be able to explain about how does ear maintain the body balance, and then speed of sound. Now let's see the structure of human ear. Dear students, human ear is a sense of hearing. It is a organ of hearing. और जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सुन सकते हैं. It also maintains the equilibrium of the body. It means that maintains the sense of balance. इस पॉइंट को हम इंशाल्लाह एट द लास्ट जो है वो इंटरनल ईयर में डिस्कस करेंगे डीपली कि कैसे जो हमारा ईयर है वो सुनने की समाहत को बैलेंस करता है. ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ईयर विच कंसिस्ट ऑन पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम. सेकेंड वन इज मिडल ईयर. यहाँ पर हम मिडल ईयर को डिस्कस करेंगे जिसमें 3 मेन बोन्स हमारे पास होती हैं, मेलियस, एंकस एंड स्टेपीज. देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉइल्ड फॉर्म में जो है स्नेल फॉर्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉक्लिया कहते हैं. हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और एडिटरी नर्व जो कि ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है. तो हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर में इन तमाम पार्ट्स को. Now what is the structure of external ear? It consists on 3 main parts, pinna and auditory canal and then eardrum. Now let's see the function and structure of all these parts. First of all, pinna. It is outermost part of the human ear, which is made up of a cartilage and covered with skin. It helps to direct the sound waves into auditory canal. There are a special gland in auditory canal which produce wax. This wax and hairs in auditory canal protect ear from small insect, germs and dust. In addition to this, they help to maintain the temperature and dampness of auditory canal. It also repel the water. Sometimes जब हम शावर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है बच्चों के कान में पानी जो है वो ईयर ड्रम में इंटर हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैक्स होती है इसको हमें कॉटन स्वैब के ज़रिए या किसी भी पंचिंग मटेरियल के थ्रू कभी भी रिमूव नहीं करना चाहिए. इसका ये फंक्शन है कि ये एंटी बैक्टीरियल होती है, यानी हमें किसी किस्म का जो जर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं उनको ये यहाँ पर इंटर नहीं होने देती. वो यहाँ पर इस वैक्स की वजह से मूव नहीं कर सकते. सेकेंडली हमारे पास जब हम शावर लेते हैं तो हमारे पास जो ये रिपेल करती है वाटर को ताकि वो ईयर ड्रम में इंटर ना हो सके. There is a thin membrane separate external ear from middle ear known as ear drum. तो यहाँ पर हमारे पास एक आप कह सकते हो कि एक मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है. स्ट्रक्चर ऑफ मिडल ईयर. मिडल ईयर इज चैम्बर आफ्टर external or outer ear. 3 small bones called malleus, anchors and stapes. These are collectively called middle ear ossicles, which is present in a chain, and these are movable bones. Malleus is attached with eardrum. जहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट बोन होती है मेलियस, ये हमारे पास जो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर होता है ईयर ड्रम उसके साथ अटैच होती है. देन हमारे पास एंकस और फाइनली स्टेपीज होती है दैट इज़ कनेक्टेड टू अ ओवल विंडो. ये आपके पास एंकस है, ये आपके पास स्टेपीज है. ये दोनों बोन फर्दर कनेक्टेड होती हैं ओवल विंडो के साथ
Oval window separates middle ear to inner ear. Middle ear also communicates with the nasal cavity through eustachian tubes. These tubes regulates the air pressure on both sides of the eardrum. तो ये ट्यूब यहाँ पर आपके पास ऑस्टेचियन ट्यूब्स होती हैं जो कि प्रेशर को यहाँ पर बोथ साइड ऑफ द ईयर ड्रम्स को रेगुलेट करती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, इट कंसिस्ट ऑन 3 मेन पार्ट: वेस्टिब्यूल, semicircular canal and cochlea. Vestibule is present in the center of inner ear. 3 canals called semicircular canals और posterior to the vestibules, ये यहाँ से vestibules के पीछे होती हैं हमारे पास, ठीक है. Then cochlea is made up of 3 ducts. हमारे पास देखें ये cochlea जो है ये 3 duct से बना हुआ होता है and wraps itself into a coiled tube. ये एक आपके पास कॉइल्ड फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है. साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडल डक्ट ऑफ कॉक्लिया. हमारे पास इसकी जो सेंट्रल यानी मिडल डक्ट होती है उसमें साउंड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, वी विल सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर और हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, we know that pinna is the external part of the human ear which directs waves into sound waves into auditory canal, and the sound waves hit eardrums and produce vibration in it. From eardrums the vibrations strike middle ears and then produce further vibration into malleus, incus and then stapes, which is the movable bones of middle ear. From stapes vibrations strikes to the oval window and then reach to the cochlea. Cochlea is filled with a fluid filled middle duct which then directs sounds toward the receptor cells. Then nerve impulse is generated which travels to brains and produce sound. Many of us take for granted a very extraordinary organ, our ears. To understand the ear, we need to understand what sound is. The speakers you are listening to right now are vibrating, flexing in and out, causing a wave of pressure through the air. The frequency of these waves, or the speed at which the sound creating surface moves back and forth, affects the pitch of the sound. The level of air pressure in each wave is directly related to how loud the sound is. The outer part of our ear catches these waves. It faces forward and has a specially designed structure of curves helping us to determine the direction of the sound and also emphasize the frequencies used in human speech. Now that the sound waves are caught, they travel through the ear canal and strike against our eardrum, a thin membrane about 10 millimeters wide. Now that we receive the sound, the middle ear transfers this energy. The smallest bones in your body, the malleus, incus, and stapes, start in motion. The malleus is attached to the eardrum, and as the sound travels along, the force is amplified by leverage until it arrives at the stapes, which acts like a reversed piston, creating waves in the fluid of the inner ear. The most significant increase in pressure is caused by pneumatic amplification. The face of the stapes has a surface area of about 3.2 square millimeters, while the eardrum has a surface area of 55 square millimeters. Using this, along with leverage through the malleus and incus, the final pressure is 22 times greater than when the sound first arrived. Now we come to the most complicated part of the hearing, the cochlea. In reality, it is coiled up, but it is easier to understand straightened out. There are actually 3 chambers inside, but let's take a look at the central part. The stapes is causing pressure waves to travel through the structure. Along the inside wall is about 20 to 30,000 reed-like fibers. As the waves move along, they encounter fibers with the correct resonant frequency and energy is released.
These fibers aren't actually what give us the signal that we heard something. There is a special structure next to these fibers containing hair cells. When the fibers resonate, they cause the hair cells to move, which then sends an electrical impulse to the cochlear nerve and onto the brain. Certain pitches of sound will resonate in specific locations, and louder sounds will cause more hair cells to move. Our brain interprets all this raw data, making it possible to enjoy things like music or an engaging conversation. Just to think that all of this is happening in your head right now at full speed. This is just one of the amazing systems found in the human body that go far beyond our humble human understanding. Sense of hearing is a great blessing of Allah Almighty. If there is any impairment in our ear function, that is known as abnormality, deafness, साउंडलेस वर्ड होता है हमारे पास, तो हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेफनेस. ठीक है, तो इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ मिडल ईयर ओसिकल्स. जहाँ हमारे पास 3 बोन्स थी, मेलियस, एंकस और स्टेपीज, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से, उसमें डिफेक्ट होने की वजह से हम डेफनेस को फेस करते हैं, और ड्यू टू ऑडिटरी नर्व. ठीक है, देन इट इज़ ऑल्सो इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूस्टेचियन ट्यूब. हमारे पास जो ये ट्यूब होती है, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी डेफनेस हो सकता है. ठीक है, ये ज़्यादातर इस वजह से होता है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लू होता है या वो एलर्जिक होते हैं, तो हमारे पास इस ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है. देन ईयर ड्रम में बी डैमेज बाय इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल. यहाँ पर हम फिर देखेंगे कि जो हमारे पास ऑडिटरी कैनाल होती है, उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों के कान में वैक्स अगर एक प्रॉपर आप कह सकते हो कि अमाउंट से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और उस वजह से भी ये डेफनेस हो सकती है. ठीक है, देन एक्सेसिव नॉइज़ and strong balls on cheek, pointed objected entering and attack from insects may affects hearing. तो ये सारी causes जो हैं वो deafness cause कर सकती हैं. Dear students, you all have experiences a lightning and thunder at rainy night or rainy day. Now let's see the speed of sound. That sound travels slower than light. A thunderstorm is characterized by the presence of lightning and thunder. The lightning is caused by electrical charge due to the movement of water droplets or crystals by wind. Its mean due to the collision of electrical charge, it may cause lightning. The sudden increase in pressure and temperature from lightning produce rapid expansion of the air. This rapid expansion of the air produce sound and thunder, which we are able to hear. The flash of lightning is followed after some seconds by a roar of thunder. This time phase difference is due to the fact that sound travels slower than light. It's mean पहले हम लाइट को देखते हैं, फिर हमें आवाज़, बिजली की गरज और चमक की आवाज़ सुनाई देती है. Dear students, now let's see what we have studied today. Today we have discussed about structure of human ear, in which we have learned about external ear, middle ear and internal ear. Then we have learned about the process of hearing, and at the last, how does ear maintain the body balance, in which we have discussed about the semicircular canal and vestibule tubules. Success criteria to remember the structure of human ear. Name of the part of external ear, middle ear and internal ear and its functions. Then function of human ear, how sound is produced, and then causes of deafness, and at last how ear maintain the balance of body. Written word according to this topic is exercise. Understanding the concept. How would you describe the structure of external, middle and inner ear of man? Question number 2. Explain the role of ear in the maintenance of balance. And question number 3. What are the causes of deafness?